Um, Good evening, all of you. My name is Savita, and today we're going to talk about the two topics. First one is the tax audit, and the second is the CA certificate. Tax audit, as we have already read in our CA circular, that is covered under section 44AB. 44AB basically says that if you are the income tax assessee, then you are required to get your books of accounts audited under section 44AB. So, does it mean every assessee has to get their books accounts audited under section 44AB? No, only if the 44AB is applicable only if you are falling into the particular criteria. First one is when you are doing business or the profession and during the year the gross receipt from the profession exceed the 50 lakh rupees, or if you are doing the business and the gross turnover from the business exceeds the 1 crore rupees, only in that situation you have to go for the tax audit. However, the limit of the 1 crore has increased from the 1 crore to the 10 crores if during the year the cash receipt is up to the 5% of the total receipt and the cash payment during the year is up to 5% of the total payment. In that situation, the relaxation has been given and the limit of the 1 crore has been increased to the 10 crore rupees. The second scenario is when you have opted for the presumptive taxation. So, what is presumptive taxation? It is basically a scheme introduced by the government to give relief to the small taxpayers who cannot want to book. Sorry, I'm just quite nervous. Sorry. Presumptive taxation is basically a scheme which has been introduced by the government to allow the small taxpayers who are not required to maintain their books of accounts or get it audited. So they are basically the three sections: Section 44AB, AD, ADA, and the AE. We're going to talk about the AE later. First, let's talk about the 44AD and the AE. So, if there is a section which says that if you're doing the business and during the year, if your gross receipt up to 2 crore rupees, then you can opt for the presumptive taxation. What are the benefit of the presumptive taxation? The benefit are that you don't have to maintain your books of accounts. You don't have to appoint a CA to get your books of accounts audited under tax audit, and you just have to calculate like there's a minimum percentage. Then you have to offer to the tax authorities for the purpose of the taxation that are 6% and the 8% in the case of the business and 50% in the case of the profession. 6% is you can opt like you can go for the 6% if you are receiving all the receipts from the profession through the banking mode, and if it's from the mode other than the banking mode, then it's 8%. For the profession is 50%. There's a one who are the assessee who can opt for the presumptive taxation are the resident assessee who are individual, HUF, or the partnership firm. However, LLP cannot offer the same. There are the three more assessees who cannot opt for the 44AD, and those are the agency, the person who are engaging in the agency business, who are earning their income from the commission of the brokerage, or who have already opted for the 44ADA or the 44AE. The idea behind the 44ADA and the ADA is to give the relief to the small taxpayers, but there can be certain situations when the people are getting the benefit, the undue advantage for the section. So that is why the lock-in period of the 5 years has been introduced by the government. So what is the lock-in period? Suppose in the financial year 2023 to 2024 you have opted for the presumptive taxation and you have shown to the government that you are earning at least 6%, 8% or the 50% of your gross receipts or the gross turnover from the business. Then in that situation you can offer the presumptive taxation, and for the next five financial year you have to continue opting it. If in any of the financial year you have decided that you do not want to opt the presumptive taxation and you want to file your simple ITR 3, then in that situation you have to maintain your books of accounts and you have to get it audited. So that is the second scenario when you have to get your books of accounts audited in section 44AB. Other than that, the benefits of opting for the presumptive taxations are is that in the normal situation an assessee has to pay the taxes in the advanced taxes in the 4 installments. However, if you are opting for the presumptive taxation, only one installment is required to be paid by an assessee, and that is by the 15th of March. Basically the two forms which are there for the audit, for the tax audit. First is the 3 CA CV and the CD. CD is basically a annexure, and the CA and the CV are the reports. So, if an assessee is required to get their books of accounts audited under any other law, then it is sufficient for the tax audit purposes that you obtain the CA report, the 3 CA report from your chartered accountant, and it will be considered that the tax audit has been done properly. And of course, 3 CD is compulsory because that's the annexure, and the CV in the other situations. And other than the facts, like other than the basic things that we have already read, there's a one more thing: can the tax audit can be revised? So in the normal situation, the tax audit report cannot be revised.
However, if there are the circumstances when the law has been changed retrospectively, then in that situation tax audit can be revised, or there is a change in interpretation of law, even in that situation tax audit report can be revised, or there is a revision of the account after the adoption in the general meeting, even in that situation or tax audit report can be revised. So these are the basic provisions of the 44AB, AD and the ADA. 44 AD में जो है, the Mm-hmm. audit is required only once you have adopted and you want to go out of 44 AD. Only in that case tax audit is required. Sorry, I didn't. नहीं, 44 AD का audit जो है, हाँ, normally 44 AD वाले cases में नहीं required है. If you are opting out of it and you are declaring your income less than the deemed percentage, or you are opting out of it, and the income which is offered to the tax is more than the basic exemption limit, in that situation tax audit is required. If it is less than the percentage, The deemed percentage. 44 AD से तो बाहर आप तभी जाओगे. हाँ. It is less than that. अगर 8% से ज़्यादा है फिर तो आप ऐसे ही 44 AD ही हो. In that situation you are So not only in able. that situation you have to. So if it is the first year Mm-hmm. and your profit is less than 8%, then you don't need to get your audit done in 44 AD. No, not in that situation. Considering you are not, your turnover is not more than 1 crore rupees or the 10 crore rupees or 50 lakh rupees. So in the normal, ज़्यादा है. अगर तो let's suppose 2 crore turnover है. and you are not opting for the 44 AD, you have to get your books of accounts audited in that situation. किसके साथ हम check कर रहे हैं? No. Was there? No, the point is that 44 AD audit को in certain situation कराना है. 44 AD का objective ये था, हालांकि the government has unnecessarily complicated this particular provision. The idea was this कि small SSE है, उसपे जो है wide revenue should, while the department officer should be wasting time. अगर आपने 8% से ज़्यादा profit दिखाया तो ठीक है, आपने books of accounts maintain करी, apply किया, नहीं किया, सब आपको छोड़ देते हैं. आप 8% के हिसाब से profit दिखा दो. Pay tax according to 8%, at least 8%. Minimum should be 8%. It can be anything more than that. Yeah. और अगर आप 44 AD में एक बार opt कर रहे हो, and if you do not continue it for 5 years, और बीच में अगर आप उसको छोड़ देते हो, and you are opting out of this 44 AD, you want to show profits less than 44 AD, then you have to get your accounts audited. Right. My question was that what happens in the first year? First year, मैंने 44 AD opt नहीं करना, मेरा 6% profit आ रहा है. No. If your turnover, the basic criteria would be there. If your turnover, then you have to get your accounts audited. नहीं, we are not opting for the 44 AD ना. Normal वाली situation में तो limit is 1 crore. 1 crore and 10 crore है. हाँ. Sir is saying, I think sir is, but sir is saying we are not opting for the 44 AD. तो जब हम वो opt नहीं कर रहे तो there is no question of like 2 crore वाली limit ना. नहीं, 2 crore वाली limit is as per my understanding 2 crore. चलो 10 crore की limit हम छोड़ देते हैं for the time being. हम ये देख के चलते हैं कि tax audit की limit जो है, that is present limit is tax audit की limit is 1 crore. For the financial year, हाँ जो भी गया. 1 CR is the limit for tax audit. So my अगर 1 CR से ऊपर है, और मैं 44 AD में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही 44 AD audit कराना पड़ेगा. If it is more than 1 CR. Yes. If it is more than 1 CR and my profit is more than 8%, then मुझे 44 AD कराने की जरूरत नहीं है. No. In the first year, if you are saying your turnover is more than 1 crore rupees, it doesn't matter how much profit you are showing in your books of accounts. If you are filing like the normal return, तो उस वाली situation में तो you have to get your accounts audited. 6%, 8% वाला point तो तब आता है when you are opting for the presumptive taxation. अगर 8% से ज़्यादा है तो मैं presumptive ही करूँगा ना फिर तो. नहीं, बट उसमें ये हो जाता है ना 5 ईयर का आपका लॉक इन हो जाता है. फिर आपको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बनानी पड़ेंगी आपको, एंड देन यू हैव टू गेट इट ऑडिटेड, तो उसका थोड़ा कॉस्ट का कंप्लायंस बढ़ जाता है. इन द नॉर्मल सिचुएशन देयर आर द 2 लिमिट्स. 1 crore वाली आपकी तो रहेगी. देयर द presumptive taxation जो 2 crore वाली लिमिट है, that will be there only if you are opting for the presumptive. नॉर्मल सिचुएशन में तो there is a limit of the 1 crore, 10 crore and the 50 lakh rupees. उसमें प्रॉफिट आप कितना भी दिखा दे. That is professionals. हम अभी वो 10 crores जो खाली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाले 95% ट्रांजैक्शंस को छोड़ देते हैं. So we are talking of a simple case. 1 crore की 44 AD की लिमिट है और 2 crore
crores की उसकी 4480 की let us look at various combinations which can be there पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं फर्स्ट ईयर में अगर मेरा 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है और मेरा प्रॉफिट इज मोर देन 8% तो मैं 4480 में जाऊंगा तो मुझे टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली माय टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ it is less than 2 crores but my profit is less than 8% in the second year you are saying in the first year itself in the first year की बात कर रहा हूं okay so my profit is less than 8% so I don't want to go into 4480 because my turnover is more than 1 crore then I have to get myself audited ठीक है because 1 करोड़ से ज्यादा है 4480 अप्लाई होगा 4480 की एग्जेम्पशन मेरे पास है नहीं आई एम नॉट गोइंग इन फॉर 4480 so मुझे ऑडिट करना पड़ेगा थर्ड सिचुएशन है कि मेरी 1 करोड़ से कम टर्नओवर हाँ मेरी 1 करोड़ से कम टर्नओवर है और मैं 8% से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा हूं फिर मैं 4480 में चला गया वो भी सिचुएशन खत्म हो गई you can totally opt for that last situation is my turnover is less than 1 crore and my profit is less than 8% first year की बात कर रहा हूं मैं tax audit is not mandatory in that situation tax audit मतलब profit अगर आप normal books of account you should have to maintain. हाँ normal books of accounts के लिए there's a section 44A So 44A में compliance अगर आपका turnover 3 लाख से exceed है और profit 2.5 लाख से exceed है तो आपको books of account के ऊपर चलो ठीक है books of accounts को मेंटेन करते हैं उसमें वो सारी बातें नहीं है चलिए सो 4480 का फर्स्ट ईयर निकल गया अब सब्सिक्वेंट ईयर में आ जाते हैं अब सब्सिक्वेंट ईयर में सेम ऑल वुड अप्लाई एक्सेप्ट फॉर कि अगर मैंने 4480 लास्ट ईयर यूज किया था और अब मैं इस बार 4480 में नहीं जाना चाहता बिकॉज़ ऑफ माय प्रॉफिट इज लेस और अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है that's why you have to कम है या मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया तब भी मैं 4480 से बाहर हो गया सो देन इन दैट केस आई हैव टू गेट माय अकाउंट्स ऑडिटेड yeah exactly so the only situation in that particular case would be that my जो है अगर my profit is less than 6% then in that particular case my turnover is less than 1 CR so even then I have to get my accounts audited yes बाकी सब सिचुएशन तो कवर्ड है ही सही बाकी सब सिचुएशन में तो मुझे ऑडिट करना ही 4480 is different मेरे ख्याल से 4480 is for the professions तो उसके लिए लिमिट है like the basic limit is the 50 lakh however for the from the financial year 23-24 the limit has been increased to the 75 lakh the condition is same that if your cash receipt is up to 5% of the total receipt those are the same things professions have been defined over there so if you are into the profession which is not covered over there in that situation you have to get your accounts audited you cannot opt for the 4480 other provisions are similar like similar to the 44 similar है 5 year lock in वाला और उसके yes सेम प्रोविजन है सर 44A में एक डिफरेंस है उसमें ये डिफरेंस है कि अगर आपका प्रोफेशन है वो 44ADA में कवर होता है तो चाहे आप 44ADA ऑप्ट करो या ना करो आपको मिनिमम 50% दिखाना ही पड़ेगा अदरवाइज आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा यस सो मेरी ऑडिट 4480 में लिमिट क्या है कि ऑडिट वाली 1 crore AB1 50 lakh 50 लाख है मेरा टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 4480 की कितनी लिमिट है ADA के लिए is 50 lakh same the limits are same for the AB हाँ the only difference is 44 ADA लोगे तो books of accounts ही बनाना audit नहीं करवाना but the limit is same एंड मैं जो प्रॉफिट जो शो करना चाहता हूं वो लेस देन 50% और अब मेरा प्रोफेशन जो है 4480 में कवर होता है इस केस में मुझे ऑडिट कराना ही पड़ेगा ये 4480 4480 से डिफरेंस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग 4480 एंड 4480 आर डिफरेंट उसमें लॉक इन वाला पीरियड वाला क्लॉज शायद नहीं है उसके अंदर सिंपली ये कहना मेरा प्रॉफिट 50% से कम है तो मुझे ऑडिट कराना ही पड़ेगा अगर आपका प्रोफेशन उसमें कवर होता है अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका प्रॉफिट इज लेस देन 50% देन यू हैव टू पे योर टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट के लिए प्रोफेशनल के केस में 25 लाख है कि 50 लाख है 50 50 लाख है सर बेसिकली सेक्शन को गलत जगह उन्होंने डालना चाहते थे वो वहां पे कवर हुआ बेसिकली ये ऐसा लगता है कि ये ऑडिट का सेक्शन है ऑडिट कराने का सेक्शन है रिजेंटिव में उन्होंने डाल दिया ऑडिट का उन्होंने पर्पस ये था कि भाई अगर आप 8% से ज्यादा या 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो तो कुछ भी मत करो तो उन्होंने वहां लैंग्वेज चेंज कर दी उस वजह से सारा वो डिफरेंस हो
AD में अलग चीज है, उसमें तो पर्पस मीट कर रहा है कि 44 AD की जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी है उसकी वजह से उसका पर्पस ही मीट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि मैंने मिनिमम तो लिखा नहीं है। अब सेकंडली उसमें 44 एडी में जो है लिमिट है 50 लाख से सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है 50% से ज्यादा तो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन प्रोसेसिंग का 50 लाख से सीधे लेना है ऑर्डर 44 एडी है। टैक्स ऑडिट का 50 लाख से ऊपर वैसे ही कराना है ना, तो वैसे Should I move further? बस दैट्स ऑल। No, there's one more topic, CA certificate. So in the normal situation, whenever we are issuing the CA certificate, what are the things that we do consider? First one is we have to see like we are it is dated properly. The particulars that we are stating over there that we certify this and this that this and this thing, they have been checked thoroughly, and the information that we are certifying is correct. However, what if I would say in a particular situation, even though you have checked like all the information that you have given is true and correct and that it is dated properly, UDIN has been generated, even in that situation you can be held guilty of the professional misconduct under the CA Act. Yes, it can happen, and that is the case of the Shri H. Nagaraju versus CA Lingaraj M. Pujari. I'm gonna call him CA from this point onward. So what just happened? The CA issued a certificate to the assessee. However, it was not addressed to the person to whom it is issued. For example, if there is a taxpayer or there is an assessee who comes to me and say telling me ki issue me this certificate, I've issued the certificate, and instead of addressing it to the person to whom for which purposes it is going to use, I have written over there to whomsoever it may concern. In that situation you can be held responsible, you can be held guilty of the professional misconduct. So in this situation, what the disciplinary committee has said, that they have relied on the guidance notes on the repulsion certificate, which states that there is although no fixed format for issuing the certificate or the reports. However, in the certain situation, if you can identify the addressee, you know that who is the addressee and for which purposes it is used, it is preferable that you address the certificate to that person instead of writing the words to whomsoever it may concern. So in this case, the CA hasn't like addressed the assessee, even though he knows that the assessee required the certificate for the banking purposes or for other purposes. So the disciplinary committee came to the conclusion that the CA neglected on his part and he didn't exercise the enough due diligence in that situation and held guilty of the other misconduct under the part 4 of the first schedule of the CA Act. And the similar judgment was there for the other case as well, which is Srimati Pradanya Sunil Tangsil, Miss Sitcom Mumbai versus Vijay Kumar Bansal of the Mrs. VBR and Associate Delhi. So what just happened in this case is CA Vijay has issued the certificate certifying that there was no charge on the particular asset. However, at the time when the debt restructuring was done, the person to whom the certificate was issued, who basically have the assessee has basically mentioned over there to other person, to Miss Saicom, that there was no charge. However, there was a charge, and at the time of issuing the certificate, the CA Vijay didn't exercise the due diligence. He didn't care to check whether there was the existing charge on the particular asset or not. Because of that negligence on the part of the CA, and also because of the fact that instead, because he knew at the time that the assessee was gonna use the certificate for the banking purposes, but he didn't write the word like to the banking or to this and this bank. He simply wrote to whomsoever it may concern. So because of that as well, he was held guilty of the professional misconduct. That's it. I think as far as certification is concerned, it's very common practice to write whichever it may concern. So this has come as a great surprise. This was a judgment of like 2019-22. 2019 or 22. This has come as a great surprise, this particular judgment. When we are giving a certificate, the writing to whichever it may concern, even that can be construed as a professional skill. Now, उस case में what the ICAI is saying in this particular case is that it should be addressed to the person To whom it the is. certificate is being issued. But in what case? Because अब जैसे हमारे पास कोई डायरेक्टर आता है कि मुझे कंपनी की नेटवर्थ का सर्टिफिकेट दो या मेरी शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट दो. If the addressee can be identified in a situation, it is preferable, and of course as per the judgment, it is advised to the CA to write the name. However, there's no such practice like you have to do it. If the point
this. That If you please can try to please. understand. I'm giving an instance. Mm-hmm. The point is हमारे पास कंपनी के डायरेक्टर आते हैं कि मेरे को शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट दे दो कि मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग है। अप्रोच तो डायरेक्टर ने किया है। Mm-hmm. Now once the director has approached us, but that certificate he has to file somewhere else. उसने किसी डिपार्टमेंट के लिए यूज करना है उस सर्टिफिकेट को। Mm-hmm. उस सर्टिफिकेट पे अगर मैं लिख देता हूँ तो whomsoever it may concern, this is the share capital of the company. What is wrong with it? मुझे ये समझ में नहीं आया। बेसिकली ये है कि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इन द सेकेंड सिनेरियो दैट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विजय ने क्या किया था कि ही बेसिकली इशू द सर्टिफिकेट कि किसी एसेट पे चार्ज नहीं है, बट एक्चुअल में उस पर चार्ज था। अब उसने जो जब उसने इशू किया एट द टाइम ही सेड कि असेसी ने उसको आगे बोला है कि इसको बैंकिंग के पर्पस के लिए चाहिए था, तो उन्होंने लिख दिया टू whomsoever it may concern, बट लेटर ऑन लाइक आफ्टर सम फाइंडिंग्स एंड ऑल इट वाज फाउंड आउट कि जो सर्टिफिकेट था वो जो कंपनी थी, जो एसएससी थी, उन्होंने बैंकिंग में तो यूज किया होगा, उन्होंने सेकंड थर्ड पार्टी को भी इशू कर दिया था। हाँ मर्जी यूज करें। The point here is वो तो उसने सर्टिफिकेशन गलत दिया ना। ऊपर एड्रेस करना कि movement may concern. How did that matter? The point is that उसमें तो वो सर्टिफिकेट ही गलत था। There is no charge on the fixed assets of the company. There was a charge. So that वहाँ पर तो वो सर्टिफिकेट ही गलत है। चाहे किसी को एड्रेस किया चाहे नहीं किया, that is not the point. अब मेरे से उसने शेयर होल्डर सर्टिफिकेट मांगा। Maybe if I ask the director कि भी आपने कहाँ देना है, then I can take from him कि जहाँ उसने फाइल करना है मैं वो specify कर दूँ। Instead of addressing to whom it may concern, I write the name of the authority जहाँ वो present करना है, उनको address करके वो certificate दे दूँ। Possibility can be there. पर मुझे उसकी नीड समझ में नहीं आ रही कि मेरे को जो कोई basic fact company है certified करना है, basic information of the company I have to certify. Then why I can't give a general certificate which the directors can produce anywhere? जिसको मर्जी दिखा दें वो सर्टिफिकेट, जहाँ मर्जी प्रोड्यूस करें वो, not my outlook. जो इंस्टीट्यूट ने दोनों केसेस में कॉमन चीज़ ये थी, उन्होंने ये बोला था फर्स्ट वाले केस में भी सेकंड वाले केस में भी कि मे बी द सीए वाज एक्टिंग इन अ कोल्यूजन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उन्होंने अपना एक ड्यू डिलिजेंस नहीं एक्सरसाइज किया एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सर्टिफिकेट, इवन आफ्टर नोइंग द पॉइंट दैट दिस पर्सन इज अगर उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, नेग्लिजेंस है, सर्टिफिकेट गलत है, वो सब एक कैटेगरीज अलग है। यहाँ पे कैटेगरी ये थी कि टू मूवमेंट में कंसर्न क्यों नहीं दिया, दैट इज द पॉइंट, व्हाई नॉट इंटरेस्टेड टू द अथॉरिटी। वो वाला इशू समझ में नहीं आया कि वाली इंफॉर्मेशन सारा की ट्रू एंड करेक्ट है, उस केस में अगर कुछ हो वही तो प्रॉब्लम है ना कि वहां पे उन्होंने किया ना कि टू मूवमेंट में कंसर्न क्यों नहीं किया आपने, व्हाई नॉट इंटरेस्टेड टू द स्पेसिफिक अथॉरिटी। मे बी जस्ट क्या था इशू? इंस्टीट्यूट ने जो फर्स्ट वाला केस था उसमें बेसिकली ये बोला है कि आपने केयरफुल एग्जामिन नहीं किया डॉक्यूमेंट्स को, आपने उन्होंने पॉइंट यही दिया है कि ड्यू डिलिजेंस नहीं एक्सरसाइज किया एंड इट मे बी मिसयूज्ड, जैसे सेकंड वाले केस में तो मिसयूज कर लिया था। ऑल्दो अगर वो ये लिख देते कि बैंकर को इशू होना है तो उस वाली सिचुएशन में वो सर्टिफिकेट फिर किसी और को नहीं वो लोग दिखा सकते थे कि दैट दिस इज द सर्टिफिकेट, इसको दूसरी पार्टीज को नहीं दिखा सकते। तो आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली द कॉमन पॉइंट वाज कि उसका मिसयूज ना हो। चलिए काम करें। एरिया ऑफ सर्कुलेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, अगर गलत सर्टिफिकेट भी अपने एरिया ऑफ सर्कुलेशन गलत सर्टिफिकेट एरिया रिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं। मतलब ये हुआ गलत सर्टिफिकेट इशू कर दो, एड्रेस कर दो कि वेट टू द जो है क्या कहते हैं कमिश्नर दिल्ली पुलिस, ये सर्टिफिकेट गलत है, कोई बात नहीं आप यूज कर लो इसको, इसके लिए यूज कर लो। चलिए एनीवे द पॉइंट इज दैट आई थिंक यूज नॉट बिकमिंग वेरी क्लियर, बट देन ये है कि वी ट्राई एंड इंस्टेड ऑफ इशूइंग जनरल सर्टिफिकेट रूम में कंसर्न, लेट अस ट्राई एंड इशू इट, कोई हमारे को सर्टिफिकेशन इशू करना है स्पेसिफिक पर्पस पूछ के उनसे ड्यू डिलिजेंस करके कि भैया बताओ किसने मांगा है, क्यों मांगा है, एंड देन वी इशू द सर्टिफिकेट। और ऑल ओवर के केस में वो बेसिकली कोर्ट पे इनिशिएट क्लियर कर रहा है कि बैंकिंग नोट के लिए फाइल है, उस केस में स्पेसिफाई कर देते हैं दिस हैव यूज्ड फॉर ऑल बैंकिंग पर्पस या एनएसी को कई बार टेंडर के लिए आज नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा नहीं, एड्रेस नहीं पता नहीं है ना तो कहां कर सकते हैं आपको पर्पस एनएसी लिख देते हैं, एनएसी के लिए एनएसी मेंशन कर देते हैं, बैंकिंग पर्पस पे बैंकिंग नीचे ऊपर तो गवर्नमेंट में कंसर्न लिखते हो ना, नीचे स्टार लगा लिखते हैं तो वो लिखने के ऊपर लिखो मत ना गवर्नमेंट में कंसर्न तो एड्रेस को टू द कॉन्सुलेट सच एंड सच एम्बेसी, ये वो जो टर्नओवर है वो टर्नओवर वो तो ज्यादा ऐसे ही जाता है, ओवर ही जाता है, अगर कोई उसका है कि आपको फॉरेक्स का देना है कुछ और देना है उसमें स्पेसिफिक उसे बैंक को स्पेसिफाइड मेंशन फॉर्मेट ही आता है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट आता है, उसी फॉर्मेट में जाता है, जैसे कि डायरेक्टर को ईमेल लिख सकते हैं अगर वो शेयर होल्डर केस दे रहे हैं डायरेक्टर को ही देंगे एज पर आवर रिकॉर्ड इज द शेयर होल्डर को तो पता ही होगा। डायरेक्टर ही नोस द शेयर होल्डिंग बेटर देन अस, तो हम क्या सर्टिफाई करके देंगे,
वो तो ये है कि या तो डायरेक्टर से ही बोलो कि भाई वो अपना जिसके लिए सर्टिफिकेट बनाना है वो बना ले, उसको वो साइन करके हमारे पास ले, हम उसको सर्टिफाइड करते हैं कि दिस इज द करेक्ट information aforesaid information is verified and found to be correct करके हम certify करते हैं उसको. I mean the point is that certification, genuine certificate movement में कंसर्न करके मत इशू करो, that is the objective. हमें तो इतने सालों में मतलब 40 साल में आदत पड़ गई है कि सर्टिफिकेट में कंसर्न करके सर्टिफिकेट. अब now I think we need to change our habit कि ये इशू नहीं करना, that is the point. पर इसका वो जहाँ ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं देखी, नेग्लिजेंस है, गलत सर्टिफिकेट दे दिया, वो सारे केसेस उसमें आ रहे हैं. Merely not writing the authority to move the certificate has been issued, वो बात अभी तक clear नहीं हुई इसके अंदर. I think misuse now basically इसीलिए. That's all. Anything else? Anybody would like to discuss? कुछ नहीं, सब बोर हो गए, काफी बोरिंग हो गया, हैं? जल्दी हो गया. ये ऑडिट का जो कर रहे थे उसमें भी कोई बाहर का कोई आदमी आके पूछ रहा है, उसको रिस्पॉन्ड तो करो, यदि वो पूछ रहा है तो उसको बताओ तो सही, यस नो उसको रिस्पॉन्ड किया करो. चलिए, एनीवे नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर कर दिया, कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए? सिमरन का ITR और TDS में difference ITR और TDS में डिफरेंस. चलिए, my request is that I think पिछली बार भी मैंने शायद बोला या उसने पिछली बार बोला था, please take initiative, please take the topics, और जो है you can bring those topics to me. और जो पिछली बार थे मैंने बोला था कि वैसे को आ जाना, उसको हम ब्लॉग बना देंगे, उसका मतलब सबराइटर बना देंगे, ब्लॉग बना देंगे. किसका था? आपका था, ईटी आपका भी रहता है अभी तक, वो कोई आता ही नहीं है. Sorry? आज नहीं हो पाया. चलिए, आज तो ठीक है, एक दिन की तो एग्जाम्पशन दे सकते हैं, लेकिन काफी दिन हो गए, तो उसके दिनों में तो फ्री होती होगी बीच में, तो मैं तो फ्री रहता हूँ, मेरे पास जिंदगी में काम नहीं होता, जैसे मेरे पास गया है और मुझे पता है दिन भर कराना होता है. क्या नंबर लगता है वहाँ की कई बार रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है, नहीं मेरे को ज़्यादा तो बीच में. अरे ये बिल्कुल जानबूझ के ऐसा पैसे मैं बल्कि बिल्कुल से बोलता रहता हूँ, किसी को भेज दो भैया, मैं खाली बैठा हूँ, मैं काम दे दो मेरे को. तो शाम 5 बजे पूछना कभी वहाँ नंबर लगे होते हैं. 5 बजे? नहीं, 5 साढ़े 5 बजे इसलिए होता है कि जल्दी जाना होता है ना सर. अच्छा, तो जल्दी मेरा नंबर आए तो फिर जल्दी मैं चल जाऊँ, 6 साढ़े 6 बैठेंगे तो 7:30 घूमने ही घूमने. चलिए, anyway, so the point is that वैसे बहुत कम होता हुआ ऐसा कि जब वेट करना पड़े तो मैं जनरली अच्छा, सबसे पहली चीज मैं सवेरे आते ही मैं अपना कोई काम नहीं करता, मैं आते ही सबसे पहले आके कोई पूछता हूँ या जिसका कोई है नहीं, उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हैंड देता हूँ, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आ जाओ मेरे पास. सर हम एक रजिस्टर रख देते हैं रिसेप्शन पे, जो लोग आएंगे जिन्होंने डिस्कस करना अपना मैटर लिखते हैं वहाँ पे आप मतलब मेरा गवर्नमेंट ऑफिस बना दोगे, ये पहले वो सिंटेक्स ऑफिसर हुआ करते थे, उनके बाद रजिस्टर रखा जाता था, अपनी एंट्री कर दो जाके, उसका जो है फिर आपको नंबर वाइज बुलाएंगे. ऐसा मत करो यार, ले आए तो उसका डिस्कस करके उसका क्लोज करा देंगे. चलिए, the point is that आप लोग please pick up your topics, उसको लेकर आओ मेरे पास डिस्कस करने के लिए. So I'll help you in preparing the topic also, and some topics you may not be required here, तो उसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको वहीं पर कर देंगे. और कुछ एक टॉपिक्स में wherever we feel कि it should just be shared with everybody, then we bring those topics here and then we discuss. ठीक है? But please take initiative, छोटा मोटा जो भी है, बस what is happening is बीच में clear 4 टॉपिक करते हैं सिर्फ, और ऐड हो जाते हैं कम से कम बीच के अंदर 30 टॉपिक, तो वो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है. So we need to reduce that backlog instead of उसको increase करते हैं. Okay, thank you. Thanks so much.
own